ईयर 2025, सन 2025 की बात है. When a reporter asked Xabi Alonso that he had such a successful, great career in Bayer Leverkusen, he made them win their first Bundesliga title after 30 long years. So all of a sudden, why? आखिर क्यों? He is choosing to manage Real Madrid. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. Because according to some football pundits, भाई Real Madrid खत्म हो चुकी है. They are finished. भाई 4 एल क्लासिको हार चुकी थी अगेंस्ट आवर आर्च राइवल्स बार्सिलोना. चैंपियंस लीग में आर्सेनल से हार गई. देन ला लीगा में सेकंड फिनिश करना. कोपा डेल रे हार गए. कार्लो एंसेलोटी लेफ्ट रियल मैड्रिड. पृथ्वी पे हैंसी फ्लिक नामक प्राणी ने त्राही त्राही कर दिया था. लमीन यमाल नामक बच्चे ने पूरे पृथ्वी को, पूरे धरती को रुला दिया. देन व्हाई यार? आखिर क्यों साबी अलोंसो चोज टू मैनेज रियल मैड्रिड? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. भाई साबी अलोंसो के पास एक विजन था. ही हैड अ बिलीफ, ही हैड अ जिद की इस क्लब को डूबने नहीं देंगे. He had a belief that even after so many downfalls, this club Real Madrid will rise again. The legacy of Real Madrid will never end. And today the world knows. The world knows that Real Madrid is back. They are back with Xabi Alonso. Welcome to the era of Xabi Alonso. A humble request to all my cute fans, to all my Madrid fans. If you like this video, please share, subscribe and comment. इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता. भाई मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. ऐसा बोलने के लिए मैं अंदर से तड़प रहा था. To be honest यार, I was never so excited about this FIFA Club World Cup, about the fixtures, the matches, the atmosphere. I just wanted to see my club Real Madrid playing under Xabi Alonso. I just wanted to see the tactics, the style of football Xabi Alonso will play. भाई मुझे देखना था यार that how Xabi Alonso is going to transform, is going to change this side. Because यार I love Carlo Ancelotti and no offense to him, but यार बहुत डिफरेंस है दोनों के प्ले स्टाइल में. Under Carlo Ancelotti you get a fatherly vibe that players out of position भी खेल सकते हैं. They can play freely, they can play anywhere. But under Xabi Alonso, भाई it's not possible. Under Xabi Alonso you get a strict, handsome, teacherly vibe who believes that everything should happen accordingly with proper structure, proper vision, proper gameplay, proper plan. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का. Because guys simple है. Xabi Alonso believes in hard training. Bro वो आपसे मजदूरी करवाएगा. Bro he knows how to win games. In-game transitions, in-game formation changes. He will switch formations in the middle of the game from 3-5-2 to 5-3-2 to 4-3-3. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. And in the last 4 matches of the FIFA Club World Cup, bhai, we can clearly see the changes. More ball holding, more position, more 1-2 ball passes, more long ball passes by Valverde, by Tchouaméni, by Trent Arnold, by Dean Huyson, more flexible attacking, and what's more important, कि भाई we can see the chemistry, the understanding between players, between Arda Güler and Trent Arnold, between Arnold and Bellingham, between Valverde and Bellingham. भाई we can see the freedom, the flexibility, the confidence these players are having. क्या बात है सर, क्या बात है सर. Federico Valverde, what a player man, what a player. भाई he has changed. भाई बदल गया यार. भाई अब ये वो वेलवर्डे नहीं रहा जो सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स रॉकेट मारता है. नहीं यार. नाउ ही कैन स्कोर इनसाइड द बॉक्स. ही कैन स्कोर टैप इन गोल्स. ब्रो गेम बाय गेम ही इज इवॉल्विंग. ही इज चेंजिंग हिमसेल्फ. ही इज बिकमिंग मोर लीथल, मोर एक्सप्लोसिव इन द फाइनल थर्ड अटैक्स. भाई पहले की तरह ही डज नॉट ड्रॉप सो मच टू हेल्प द डिफेंस. इंस्टेड ही सेव्स हिज एनर्जी. भाई वो एनर्जी बचाता है. He contributes more in the midfield, more in the final third attacks. He contributes more in the gameplay with Arda Güler, with Bellingham. And let me talk about Arda Güler. This kid is a wonder kid. भाई जो player was a rotational for Carlo Ancelotti, that player is now the main creative playmaker for Xabi Alonso. भाई एक हीरे की परख एक जौहरी का हो सकता है. And Xabi Alonso knows the true potential of this kid. He knows the true potential of Arda Güler. Bro, the way he's performing in the FIFA Club World Cup, incredible यार. He knows how to control the midfield, control the tempo of the game. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़. And Londo ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Let Xabi Alonso train this side for 3-4 months. Let him build a proper connection with the players, and then we will see a more different, more lethal, more explosive Real Madrid. भाई देखो यार, things are sorted for Real Madrid. We have Trent Arnold, Franco Mastantuono, Dean Huyson, and we needed a number 9, and now we have Gonzalo Garcia. What a gem he is यार. भाई this man needs no introduction. He is the main headline of the FIFA Club World Cup, and अभी the arrival of Mbappe बाकी है यार. Guys देखो यार, as a true hardcore Madrid fan, भाई अब तरस जाते हो ऐसा गेम प्ले देखने के लिए, ऐसा टैक्टिक्स देखने के लिए, ऐसे मैचेस देखने के लिए, विनिंग मेंटालिटी देखने के लिए. Bro, Vinicius Junior, who had a poor season last year, who lost his confidence. But bro, now under Xabi Alonso, he is evolving himself. Bro, he is showing improvement. And with the addition of Dean Huyson and Trent Arnold, bhai, the support and flexibility they provide from the back, it's incredible. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. And guys, to be honest, I can see my team.
I can see Real Madrid winning Champions League, La Liga, everything under Xabi Alonso. Mark my words यार, mark my words. Xabi Alonso and Real Madrid भाई तोड़फोड़ करने वाली है. And now Real Madrid will face Dortmund in the quarterfinals of the FIFA Club World Cup. भाई मजा आने वाला है यार. Vamos, Hala Madrid.